Ruchi, we can start. I think it's already 5. Sure. Yeah. So 18 people have joined. I request SCRT representative, if they are here, to please request other teachers also to join the webinar. And meanwhile, we can all discuss if there are any issues that you are facing in the course itself. We'll just take on the issues. If we need a discussion, we will do it after the webinar itself. Those people can stay back. So any issues that you're facing with the course? With the silence, I'm assuming that there are no issues. So we will go forward. Anyway, if they share it between the webinar itself, we can discuss it later. Okay. So, Tuba, what we are going to do today, first is I want to give them a task about analyzing some proportional problems, or some problems which are you have to analyze in group in different ways. And so basically it's a teacher's task of looking at different problems and seeing what kind of thinking is required. And then we can share some of the resources that are there in the clicks module also, and on FET simulations. We can even look at GeoGebra if there is a time. Just wanted to ask you if there was something else also that you had planned, Tuba? No, not today we will be solely focused on proportional reasoning because it's unit 2 main focus. So nothing. Okay. Yeah. So let me share the screen. Wait a minute. Yeah. Do you need the breakout room also? We can make breakout rooms with 5 people. Okay. Okay, and we would need to share this in form of a Google Doc then. Okay. Let me first show this. People can have a look at it, and then I can share on the Google Doc also. Can you all see my screen? Tuba, can you see my screen? I can Yes, see your ma'am. screen. Okay, okay. So these are some of the problems which a teacher has made, and they are jumbled up. So you basically have to make them into different groups. So there are around 12 problems are there, and then you have to discuss why you have grouped the problem in a certain way. Okay. So just let me stop share and share it with you on a Google link. And meanwhile, Tuba is also preparing the breakout rooms so that you can access it even in the breakout rooms also. Okay. Just give me a minute. बाकी आपने प्रोपोर्शन मॉड्यूल देखा है क्या? किसी ने प्रोपोर्शन क्लिक्स का प्रोपोर्शनल रीजनिंग मॉड्यूल देखा है? I would like to know if they had that opportunity or not. Can someone speak? Hello. You have to unmute yourself if you are speaking, anyone. Or you can reply. Okay, Jan said no. क्लिक्स का प्रोपोर्शनल रीजनिंग मॉड्यूल एक्चुअली देखना बहुत जरूरी है कोर्स के लिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप ये सारे असाइनमेंट्स भी कर पाएंगे, और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. Okay, so I have my link ready.
You have your link ready? So shall I create the room? You create the room, don't open it right now. Mhm. Okay, let me explain it to them one Yeah. more time. So I've posted the link. You can click on it and go to it. Deepak Sharma says yes, but not the whole part. Only three have said yes. Actually, you can see the link on the chat. You can click on it and open the page. I will also share it here. So I can already see people coming on the. There are 1, 2, 3, 4, 5. 5 people have already come. Request others also to open the link because without that you wouldn't be able to do this activity. So the first question is Rajni and Disha are running around the track. They run equally fast, but Rajni started later. When Rajni has run 5 rounds, Disha has run 15 rounds. When Rajni has run 30 rounds, how many has Disha run? ठीक है? So आप इसी तरह से नेक्स्ट टॉवल्स को सुखाने वाला है. So आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको उनसे अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं. ठीक है. तो तुबा हम ब्रेकआउट रूम ओपन कर देते हैं एंड वी विल keep moving to different breakout rooms to help them or to see what kind of discussion they are doing. And Yeah. Your breakout room time is around 15 minutes. After 15 minutes, we will, bring you all back to the main room itself. So 15 minutes में तब तक आपके categories बन जाने चाहिए and then we will discuss what are those categories. Yeah. Okay? Yeah. So Is everyone okay with this? सब समझ में आ गया? कोई doubts है, clarification चाहिए तो पूछ लीजिए. it's 15 minutes, no? हाँ 15 minutes. ठीक है तुबा, हम खोल देते हैं फिर. लोग Yeah. लगता है लोग बोलना नहीं चाहते बट हम Yeah. तो बोले बिना कोई भी सेशन करते नहीं है. ठीक है. Okay, I'll just open. Yeah. I think they are going. हाँ. I haven't assigned you, Ruchi. You, if you ना want to. मुझे मत असाइन करना क्योंकि फिर हाँ. मैं अलग अलग ग्रुप में घूमना है. हाँ. So you be here so that you can help me move to different groups. Yeah. Okay? People have moved. Yeah. Okay, I'm going to for room 1. Yeah. Okay. Yeah.
हाँ रुचि, यू नीड टू गो टू रूम 2, आई थिंक अजय कुमार वॉन्ट्स टू। अरे कोई स्टार्ट ही नहीं किया है काम, उनको समझ या में। प्रिया को असाइन करना है आपको, मैं एम गोइंग टू मैं ग्रुप्स। कर रही हूँ उसमें। कहाँ हाँ गए ग्रुप्स? ब्रेकआउट रूम कहाँ है? ये रहा, मिल गया। हाँ हाँ रूम 2 ना? हाँ, रूम 2। हेलो नेहा जी, आप वापस क्यों आ गए रूम 5 से? हेलो नेहा जी, आप वापस क्यों आ रहे हैं? हाँ हाँ, तो बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को। नेहा जी, आपने हाथ उठाया है, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो मैम। हाँ अभी हुआ। हाँ मैम वो शीट नहीं मुझे दिखाई दे रही है वहां पे, जो पहले लिंक शेयर हुआ था। यहाँ पे है, चैट में नहीं मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा मैम। हाँ एक मिनट में वापस से चैट में शेयर करती हूँ। ओके मैम। हाँ किया मैंने, देखो अभी आ गया होगा। यस मैम, यस मैम। ले लो। और आपका रूम कौन सा था, आपको पता है ना? रूम 5। हाँ तो आप वहां पे चले जाइए। चंदन जी, आप वापस क्यों आ गए हैं रूम छोड़ के? दीपक शर्मा जी, आप रूम छोड़ के वापस क्यों आ रहे हैं? Excuse me, madam. Network is not properly working. That's why I'm leaving and re again joining this. अच्छा, तो आपका कौन सा रूम था? रूम मतलब कौन सा वाला रूम? रूम मैं नंबर 2। ओके, मैं एक्चुअली आपको असाइन कर देती हूँ आपको। अच्छा। सुबह पाँच हाँ 7 मिनट टाइम बढ़ा दो, लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया है। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं जा रही हूँ दूसरे ग्रुप। हाँ चंदन जी, आप रूम 1 में हैं, आपको रूम नेहा जी, आप वापस आ गए। आयुषी, आयुषी, हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप अभी ज्वाइन हुए हैं क्या?
मैम अभी तो मेरा दूसरा चैट रूम दिखा रहा था, रूम 1, और उसमें 4 पार्टिसिपेंट्स और अलग थे। अब मैंने वापस उस लिंक से ज्वाइन किया तो मैं ऑटोमेटिकली इस रूम में आ गई। तो मैं आपको चेंज कर रही हूँ, आपको भेज दिया मैंने। रुचि, ये टाइम कैसे बढ़ाना है? मेरे पास इसका दिखा नहीं रहा है। म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। Make me host. अच्छा, फिर तुम्हें मुझे को होस्ट करना पड़ेगा। हाँ, या जस्ट यू आर द होस्ट नाउ। okay. Actually, I think it cannot be changed. हाँ, इट कैन नॉट बी चेंज। दैट्स आई हाउ आई अंडरस्टूड पहले से। तुम मुझे को होस्ट कर दो, नहीं तो हाँ, मैं करती या मुझे ही वापस से होस्ट कर दो। वो वापस से होस्ट कर। ठीक है, let them come back. Anyway, they have not done much. They are not able to figure it out. Yeah. They are dropping and then coming back to the main session. So There were many people who didn't wanted to speak. yeah. Hmm. Shall I close the room? If we just stop now, don't close. Let's see if it can continue like this. If it can continue it like this, then you don't need to stop. Actually, I have selected the options that it will automatically closed off, and The people are coming back. yeah, automatically. I'll have to share screen. Yeah. Where are people? They are not back. Only 6 have come back. Others are working actually. Uh, Yeah, but it will close in 47 seconds. If they Okay. want again, then we can. oh, no, don't. I don't Okay. think they have. Let me check what they are able to. Then Yeah, everyone is back now. okay.
So welcome back everyone. आप में से किसी ग्रुप ने अगर कुछ डिस्कशन किया हो तो प्लीज शेयर करें, अदरवाइज फिर हम मेन ग्रुप में ही डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैं देख रही थी कि आप लोग कर नहीं पा रहे थे, शायद आपका ब्रेकआउट रूम का पहला एक्सपीरियंस था एंड यू वर नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट टू डू। मैम रूम 2 में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया मैम। हाँ बताइए रवि जी, पहला मैम क्वेश्चन फर्स्ट कैसा है, क्या मैम कहेंगे? पहला क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है मैम, अच्छा ठीक है, और इसका आंसर 90 आएगा, 90 राउंड्स। अच्छा और दूसरा? सेकंड क्वेश्चन मैम हम कंसेप्ट तक पहुंचे नहीं है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग हम लोग कंक्लूड किया हमने, लॉजिकल रीजनिंग लग रहा है इसमें। अच्छा और थर्ड वाला? थर्ड वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैम। अच्छा ठीक है, ओके। एनी अदर ग्रुप? एनी अदर ग्रुप जिसने डिस्कस किया हो? Yes. मैडम फर्स्ट हाँ बताइए। दिस साइड दीपक शर्मा। मुझे नहीं लगता कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, क्योंकि एक्चुअली दे आर रनिंग विद द सेम स्पीड and the difference between these two Rajni's and Disha is 10 rounds, है ना? And the difference will remain same. So this is not a proportional problem according to you. Yes. Yes, I think so. Okay. So second group, what do you think about that? आपका क्या विचार है? Ravi ji, what do you think about his response? Sonam, you can also speak. Yes. Yeah. Not in a group. We have also this first one is not a proportional reasoning, to which debug is we are in the same group. Okay. Yes. So it is actually a problem of constant difference. Additive. It is a problem of constant difference, and it is an additive thinking problem because the difference will remain the same. It is not a proportional reasoning problem, so it is not a multiplicative situation. Now this problem I have tried for many years, last 8 years with many teachers, and always this happens that some group or other, they consider this as a proportional problem. And we have done this with students also, and they also consider this as a proportional problem. Now it is very important for us to think why this happens. It happens with everyone, whether it is adult or whether it is student, teachers, other people, it happens. Why does this happen? They can start considering it as a proportional problem. What could be the reason? I think I think that they have not understand they equally run. That is the mention here, but we are not considered. We are just for the round. First, Ranjana is round 5, and then we'll give proportion that others also 15. So according to both that, it look like a proportional questions. But when equally, they said that equally mentioned, that means it is one is constant is fixed. The round is fixed. So according to that, you'll get exactly the bug is mentioned. It is additive, not a multiplicative. Yeah, but they all understand the concept of direct proportion, because third, they are able to identify the direct proportional problem, but still this happens. Any other explanation for why this happens among students, even adults also? Any other explanation? None? So look closely at the numbers. What are the numbers given here? 5 and 15. They are in multiples, right? Right? Excuse me, ma'am. Yes. Yeah. Yeah. Actually, if you analyze the problem, it is given Rajni and Disha, they runs equally fast. And Rajni started later. Then when Rajni has 5 rounds, then Disha has 15 rounds. So you can see the difference of 10 rounds by Rajni. Yes. Yeah. And it has stayed the Rajni has 30 rounds. We need to find out how many rounds Disha has run. Yes. So if you see that
then you can count 30 divided by 5, that is 6 such rounds. And she has got, and you can say Rajni completes 30 rounds in 6 intervals. So in 10 rounds, it's 6 into 10, so which equals to 60 rounds. Okay, so that is how you did So it. Rajni runs 30 rounds, then Disha has run 60 rounds. But actually, if you look at this problem closely, so it is the problem of constant because they are running equally fast. Exactly. So then when Exactly. Rajni has run 5 rounds, Disha has run 15 rounds. So when Rajni would have run six rounds, then Disha would have run one more, right? Because they are Exactly. running equally 16 rounds. So therefore, if Rajni would have run 30 rounds, then Additive, Disha would have it is run like just additive. 10 more. 40. Additive 40. thinking. It is Just 40. additive. 40 rounds. So the Yes. answer is 40 rounds here. And this kind of issue happens with almost everyone. Many people make this kind of mistake. It is because first, I have already told you this is a proportional reasoning, situation. So your mind is primed. We were Proportional all looking reasoning for ढूंढना है the वहाँ. similar. We Yeah, were all whether looking there for is, that. whether it is there or not, you are You tricked trying us, man. yes. You tricked us. Yes. So this happens with students also, because when we are doing the chapter of proportional reasoning and you give them those problems, they will try to look for proportional reasoning there, whether it is there or not. But in the exam, they are not able to identify which one is proportional reasoning or not. That is one issue. Okay. Second reason is that when we are looking at mathematical problems, especially word problems, what do we look at? We are trained to look at only numbers. We do not look at the situations. We do not try to understand whether this is a proportional situation or not, whether this is a multiplicative situation or not. Okay? Yeah, very true, ma'am. You can see the second problem. It's like if you look at the number, you just have to start the calculation. Yeah. But if you think the properly, then it is seen like it is a common sense. If it is Yes. 6 Yes. के कपड़े डाले 12 डालो या 40 डालो, it will take only same time. Yes. So therefore, this one of the lesson that we can take as a teacher is that students need to analyze the situation also and then look for whether they are proportional situation or not, proportional problem or not. That is something important. Ma'am, we and most of the students run for the answer. Yes. We rush for the answer. Exactly. We don't pay attention to the question or do proper hard work to understand the question. Everyone needs the answer and Yes. they want to do it very quickly. Yes, exactly. And our competitive examination and our system is made up like that. That is true. That is what I wanted you to realize as a teacher. Yes, go ahead. Somebody was speaking? I think by mistake. Okay. Then third reason is the numbers that are used in that problem. So the numbers are in form of multiples, which makes you think of multiplication. 5, 15, 30. ये तीनों के तीनों इनके common multiples हैं. So it makes you think in multiplication. So it is sort of again tricking you into thinking in terms of it. But as mathematics teachers, as mathematics learners, we need to be careful of looking at the situation first and then looking at the numbers. I hope you take this lesson hard and you use it in other parts of your teaching also. So now we move to, we have discussed up to the third problem. Let's look at the fourth problem. Third problem, yes, it is a direct proportional problem. And second problem is a logical reasoning problem. It's not but somebody did say that it is a proportional reasoning problem. It is not a proportional reasoning problem. Because if you put 3 towels, they will also dry on 1 hour. Okay. And no, 12 hours they will dry. So 3 towels will take 12 hours. If you put 6 towels, then also they will take 12 hours. Okay. So you can, the ratio is different here. So 3
is to 12 and 6 is to 12, they are not proportional. Okay, it's a logical reasoning problem that the time taken would be same. It's not a proportional reasoning problem. You need to put that category, not a proportional reasoning. It's logical. मैम इसका भी कुछ नाम है स्पेशल नाम, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में कुछ कहते हो स्पेशल इसको? Nah, not that I am aware of. Okay, you can call it a logical reasoning problem. Okay, or it is something that you know you are aware from common sense or daily life itself. You know, something like that. Next is our fourth one. Arshad runs a bakery. He uses 10 kg flour to make 13 kg of cake. How much cake can he make if he uses 23 kg of flour? What would be the answer and what kind of problem it is? मैम ये भी प्रोपोर्शनल का ही है. Proportional reasoning problem है. आपने आंसर कैसे निकाला बताइए? This is direct proportion, I think. Direct proportion, but how did you find the answer? I want to know your method. Yeah, it's like I have written 10 upon 13 equals to 23 upon, like we have to find out the value. So 23 that upon let us X. call it as X. And then what did I you did do? the cross multiplication. Okay. And I got to the answer is 29.9 kg. 29.9. Okay. So this is, so when you look at this from a student's point of view, how would you explain what is this jadoo that you have done of cross multiplication? How did you get that answer? You did some jadoo. इधर से इसको खोया, इधर से इसको किया और आंसर आ गया. Yeah, तो आप वो जादू कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैम ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये हमारे यहाँ पहले मैं प्राइमरी टीचर था दरअसल, ये फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास में भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो यूनिटरी मेथड से हम इसको करा देते हैं. यूनिटरी मेथड. जी मैम, हमने इस तरह का मेथड वहाँ पे जब तो आपने यहाँ यूनिटरी मेथड कैसे लगाया जरा बताएंगे हमें? मैम पहले हम उसको लेके चलेंगे, ये उल्टा चलेगा ना क्वेश्चन की. इसमें जो मतलब वही जो चीज सिखाई जाती है बच्चों को कि जो पहले 1 kg का निकालेंगे ना. 1 kg का कितना होगा, कैसे करेंगे बताइए? 1.3 kg के एक आएगा ना मैम. 13 से हम 1 kg से 1.3 kg के है ना. हाँ जी, तो 23 kg फ्लोर से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 पे 23 को. ओके, ठीक है. तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज 10 kg है तो 10 kg का एक, सो नेक्स्ट 23 kg तक हमें जाना है, तो और 10 kg हो गया तो 20 kg हो गया, तो इसका डबल हो गया. एंड देन द रिमेनिंग 3 kg के लिए ही हैज टू फाइंड आउट. सो इट्स लाइक 23 का 3 कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो become more tougher for the student. Okay, so you think it is tougher, but I tell you the real thing is that students को अगर आप ये प्रॉब्लम अपने आप से सॉल्व करने को दें, तो स्टूडेंट का ये नेचुरल रिस्पॉन्स होता है इस तरह से करना, क्योंकि डबलिंग एंड हाविंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव वे ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम विच स्टूडेंट्स डेवलप very easily and much before doing any kind of multiplicative situations. Doubling and halving सबसे पहले वो सीखता है. very easily. 20 kg तो वो निकाल लेगा. 3 kg का डिफिकल्ट होगा. 3 kg के लिए वो यूनिटरी मेथड यूज करेगा. We can take both methods. और खास तौर पे अगर आप ये इनकी जो हमें स्टडीज भी पढ़ी हैं और बहुत सारे रिसर्च भी किया है, अगर खास तौर पे आप उन बच्चों को देखेंगे जिनको ये रोजमर्रा का लेना देन करना आता है, तो दो स्टूडेंट्स विल बी यूजिंग दिस मेथड आल्सो. दे विल डबल इट फर्स्ट 10 kg because it is very obvious. 10 का 20 किया, it's quickly, you can find it quickly. 10, you double the 10 to 20 and then you double 13 and 13, 26. And then only 3 is left. For that, 1 kg, yes, is 1.3. So 3 kg would be again 333, 0.3, 0.3, 0.3, 3.9. You add this, you get the answer. Students actually will naturally use these kinds of methods. What I am suggesting is not that you teach them this particular method, you teach them cross multiplication, you teach them this, you teach them that. आपकी क्लास में अगर आप बच्चों को करने को देंगे तो ये तीनों मेथड जो आज अभी हमने डिस्कस किए हैं
all these three methods would be visible in your classroom. And it is good to have this variety of methods in the classroom and to be able to draw connections between them. Okay, so allow the variability in the methods of students and let students learn from each other, क्योंकि ये जो complicated तरीके से भी जो बच्चा कर रहा है, इससे भी सीखने को बहुत कुछ बच्चों को मिल सकता है. So yes, so ये भी direct proportion का problem हुआ. हम आगे बढ़ते हैं. अब fifth problem. What do you consider the fifth problem? The engine of a train is 12 meter long. There are 4 bogies. The train is 52 meter long. If there are 8 bogies connected to the engine, how long will the train be? ये किस तरह का problem हो? मैम ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो है, लेकिन इसमें 12 मीटर का इशू है. अच्छा. 12 मीटर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हर बार, फिर आगे आएगा. तो आई थिंक हमें वी हैव टू सॉल्व लाइक दिस. इंजन का ट्रेन 12 मीटर लॉन्ग है, तो जब 4 बोगीज कनेक्ट करेंगे तो जो टोटल लेंथ है, तो यू हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम दैट. सो 52 minus 12 is 40 meter. 52 minus 12 is 40 meter, and then 40 40 meter को आप क्या करोगे? 40 40 meter meter 4 से डिवाइड करेंगे. 4 से तो divide. 8 या बोगीज फिर है ना, डबल भी कर 4 सकते हैं मैम, बोगीज के डबल भी लिए कर सकते हैं. 40. 4 का 8 8 बोगीज तो डबल बोगीज भी के हो लिए सकता है. 80 होगा. हम्म. यस मैम. तो सर 4 का आइडिया था बोगीज आप के लिए डबल कर 40. सकते हैं. 4 का 8 जो 4 आपने निकाला है 4 का आंसर, उसी को आप डबल कर दीजिए और वापस 12 ऐड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा. दैट इज अ या वेरी 90. आपने वो आसान तरीका निकाला. ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है, ये आसान तरीका है, क्योंकि डबलिंग इज वेरी इजी. ओके, सो दैट कैन बी वन मेथड. आप उसको होल्ड करके रखिए. अब इसका और भी कोई दूसरा मेथड हो सकता है क्या? कोई और दूसरा मेथड बताना चाहेगा? एनी अदर मेथड? सपोज हम इसकी इक्वेशन बनाना चाहते हैं. ओके, सो अब मैं 52 इक्वल टू कैसे लिखूंगी? 52 इक्वल टू 4 bogies plus 12 meter 4x engine. plus 12 4x plus 12. plus 12. Constant, yes. E, B. Because 12 is a Correct. constant. Correct. Yes, somebody said that. Yes, yes. Constant. So इसमें आप इस तरह से भी बच्चों को कांस्टेंट का आइडिया भी सिखा सकते हो. एंड देन दीज द नंबर ऑफ बोगीज इज समथिंग, यू नो. ये अब नेक्स्ट केस में ये 8x हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम या फिर एफाइन. These are also called as affine situations. AFFINE. Let me write it here. मैम ये 10x plus 12 नहीं होना चाहिए? एक ही इक्वेशन बन जाएगी सभी के लिए, जितने भी 10x बोगीज plus आएंगे. 12. अगर आप yes, if you consider 10 as the Number length of of the bogies. bogie, you have find that out, and then you make it, you consider the number of bogies as x. So then 52 is equal to 10x plus 12 हो जाएगा, and that is an equation which is a generalized equation, can be used for any number of bogies. Very Yes, good. That can be yet another way of looking at the forming equation. तो यहाँ पे हमें एक और आइडिया मिलता है कि even for forming equations, what we are taking as x can give you different kinds of equations, and that gives you different information. So this also something that students can learn. So ये आप याद रखिएगा कि ये affine situations है. These are approximately proportional. They are not directly proportional. Okay. Now let me remove all this. Oh. Okay, let's go to the next one.
So the next one is a fort had provisions of 300 men for 90 days. After 20 days, 50 men left the fort. How long would the food last at the same rate? ये किस तरह का प्रॉब्लम है? Indirect proportion or inversely proportional problems. Okay. So already हमने कितनी categories identify कर ली? Additive reasoning, logical reasoning, directly proportional, affine, approximately proportional, and indirect proportion. बट क्या ये सारी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बच्चों को इंट्रोड्यूस होते हैं टेक्स्ट बुक में, या से केवल एक या दो तरह की प्रॉब्लम ही इंट्रोड्यूस होती है? इनफैक्ट सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम्स ही इंट्रोड्यूस होती हैं इनिशियली, और आई मीन उसी पे चलता है, काफी बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है, और उसके अलावा ये जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो उनको बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो इसका नुकसान ये होता है कि बच्चों को ये नहीं देखना आता कि which students are not able to understand which situation is proportional and which situation is not. They are not able to evaluate that, and therefore they are bound to make these kind of mistakes as we did in the first problems or in similar other situations also. Even in inversely proportional problem, they tend to look at it in terms of this directly proportional only. Okay. Now again we look at the seventh problem. Sanjana became 2-year-old, Archana became 6-year-old. When Sanjana is 12-year-old, how old will Archana be? This question is also like question number 1 based on additive thinking. Exactly. But आपने इसमें mistake नहीं करी होगी. Did you do the same mistake here? Did you also consider it as directly proportional here? I don't think anybody would have made this. So ये हमने ये generally देखा कि इसमें लोग mistake नहीं करते, but इसमें this first problem में they tend to do that mistake. But if you do give it to children, they might still do mistake in the seventh problem also. Adults don't do it, but the children might do it. Okay, you can try it. You can give these tests, give this as a test to them. Okay, yeah. तो ऐसे ही आप बाकी प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं. एसेंशियली हमने सारी कैटेगरीज तो यहाँ पे कवर कर ली है, तो मैं अभी और डिस्कस नहीं करूंगी, इसलिए यहाँ पे आप ये प्रॉब्लम्स को और देखकर इनकी कैटेगरीज बना सकते हैं, और बच्चों को भी टेस्ट देके देख सकते हैं कि वो उनको किस किस तरह की प्रोपोर्शनल रीजनिंग ऑलरेडी करना आता है और कौन सा उनको आइडेंटिफाई करना नहीं आता है. ठीक है, एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? मैम एक्चुअली अब हमें क्या करना चाहिए मैम? लेक्चर के दौरान ये डिस्कस करना चाहिए बच्चों के साथ? बच्चों के साथ लेक्चर के दौरान नहीं डिस्कस. मैं कह रही हूँ एज ए टीचर you need to be aware that these different kinds of situations are there, and so when you are teaching them directly proportional problem, give them some logical reasoning problems also. Discuss whether that situation would be proportional or not. Give them some additive reasoning problems also. Discuss whether there is a proportional reasoning situation or not. Ask them to evaluate the situation and then look at the numbers. Is it clear, Ravi, now? Yes, ma'am. Okay. Any other questions or comments? नहीं मैम, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस तो हम बच्चों से करते ही हैं डिस्कस. हाँ जी. जैसे मैंने लास्ट वीक मतलब छुट्टियों से पहले अपनी क्लास में पूछा था बच्चों से कि भाई 2 भाई बहन हैं और भाई छोटा है, बहन बड़ी है. तो जब भाई की उम्र 5 साल थी तो बहन उसकी दुगनी उम्र की थी, 10 साल की. हाँ जी. जब भाई 20 साल का हो जाएगा तो बहन कितने की होगी? तो आधो के आंसर 40 आए थे. तो वो ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जो घुमा के पूछा जा सकता है. इसमें डिफरेंस भी आ गया और बच्चा इसमें प्रोपोर्शन की तरफ भागता है बहुत जल्दी से. हाँ, तो बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, एंड देयरफॉर यू नीड टू टीच देम टू इवैल्यूएट द सिचुएशन फर्स्ट एंड देन लुक एट द नंबर्स, यू नो, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स उनके लिए क्या है, एक नंबर का खेल है.
हाँ जी उनको नंबर्स के साथ खेलना है. They do not understand that mathematics is about understanding the situation and applying reasoning. तो जब तक वो नंबर से खेल रहे हैं वो रीजनिंग नहीं कर रहे. That is what my main point is here. Okay, yes, ma'am. I hope that was clear. So now we move to looking at some of the resources which are available for proportional reasoning. I think मैंने आपको पिछली बार शेयरिंग सिचुएशन दिखाया था, केक के शेयर वाला, राइट? क्लिक्स में. Yeah, yes, ma'am. और मैंने आपको जो पैटर्न मेकिंग वाला भी प्रॉब्लम आपको दिखाया था क्लिक्स मॉड्यूल में. आई होप आप लोग क्लिक्स मॉड्यूल और अच्छे से देख लेंगे, उसमें और बहुत सारे प्रोपोर्शनल रीजनिंग के प्रॉब्लम्स हैं. मैं आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट एक रिसोर्स दिखाना चाहती हूँ. ये रिसोर्स, इसका नाम है फेट सिमुलेशन. ओके, सो लेट अस डू दिस फेट सिमुलेशन प्रॉब्लम्स. कहाँ, ये रहा. हाँ, सो आपको सिर्फ fet.colorado.edu ये टाइप करना है और आपको ये यहाँ पे मैथमेटिक्स के बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे. सो मैं आज आपको दो चीजें दिखाऊंगी. एक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का और दूसरा है प्रोपोर्शन प्लेग्राउंड. सो पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन करते हैं. आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन. सो अब देखिए, Yes, यहाँ पे yes. आपको कुछ डिस्कवर करना है. लेट्स सी कैसे डिस्कवर करेंगे. तो अभी आपको स्क्रीन कौन से कलर की दिखाई दे रही है? ग्रीन. Green. ओके, Green color. हाँ, अब देखिए, लेट मी मूव. अब ये कलर इसका चेंज हो गया. White. हाँ, व्हाइट हो गया. अब इसको अब मैंने एक हाथ मूव किया, अब मैं दूसरा हाथ क्या हो रहा है कलर को धीरे धीरे. Change green and Green. more darker. और एक मुझे Green. साउंड का फीडबैक आया, वो ट्रिंग वाला जो साउंड था, उसका मतलब ये मैं करेक्ट जगह पे पहुंच गई. अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका ऐसा क्या है इसमें पैटर्न में जो सेम रह रहा है हर बार. या अभी देखिए अब कब ग्रीन आता है, देखिए अब नहीं आ रहा. ये देखिए आवाज आई ना. जब वो ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब मैं सही पैटर्न पे पहुंच गई. तो ये तो एक अंदाज लगाना हुआ. आप अंदाज लगा सकते हैं इनका रेशो क्या है या प्रोपोर्शन क्या है. हाँ, फिर से बोलेंगे. मैम ये कितने मूव आगे जाता है पीछे जाता है उस पे ही आई थिंक उस पे दैट ही इज. डिपेंड करता है. तो अंदाज लगा सकते हैं. चलिए, अंदाज नहीं लगा सकते तो हमारे लिए मदद के लिए यहाँ अब देखिए. अब तो आप बता सकते हैं क्या है. क्या होगा इसका प्रोपोर्शन? 3:6. अच्छा, 1:2. 1:2. 1:2. Let's try then 1 and then let's bring it back. देखिए, सो रवि राजपाल आप करेक्ट हैं. 1:2. सो एक प्रोपोर्शन हो गया 1:2. अब अगर इसमें अगर मैं पहले हाथ को 2 पे लेके जाती हूँ तो दूसरा हाथ कहाँ लेके जाना चाहिए मुझे? ये कहाँ जाएगा? Where will this go? 4. Yes. 4. Correct. Again, we got the feedback by sound, by sight. The color is changing, the sound is there. These two are the feedback, and these ये जो numbers, ये lines जो बने हुए हैं, this is helping us. So if I take it to 3, where should the other hand be? 6. 6. Okay, 6. right. Take it to 4, where should 8. this? 8. Yes. So we have solved it. Ma'am, can In you fact, move the right hand to the 7? This right hand. This is left. sorry, Right hand side. to 7. Yeah. And if somebody wants to check where the color will change. Okay. So left hand side
No, you put it on this 7. हाँ ये 7 पे रखो अच्छा और ये 7 है तो अभी ये हाँ लेफ्ट हैंड कहाँ पे जाएगा कि कलर चेंज हो? 3.5. 3. yeah 3.5. Okay, so one can check. yes. So this was challenge 1. Similarly, here there are other challenges, challenge 2, and then challenge 3 is also there. You can play on your own. Let me put this link in the chat. Oops. Kindly put it in the group also. On the group, I will be able to put it later only. Okay. Yeah. Tuba, somehow I'm not able to see the chat. Yera, mil gaya. Sorry, was looking at somewhere else. Yeah. Here you all go. Okay. So now it is also possible for you to create these challenges for students. तो यहाँ आप create कर सकते हैं और रेशो को लॉक भी कर सकते हैं. देखिए मुझे थोड़ा स्क्रीन थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है. 1 मिनट. Let me take it upstairs. Okay, so now we can create it. Ma'am, Give me a make minute. 3 by 4. 3:4. 1 मिनट 1 मिनट मुझे थोड़ा ना Yeah. यहाँ ये इसको हिलाना पड़ेगा. हाँ 3 so हाँ so let's move it to 3. Okay, and then other 2 4. Okay, and okay. No, ये actually guess करने वाला है. हाँ ये रहा. So you had ये है यहाँ पे. So यहाँ आपको change करना पड़ेगा. This you take to 3, and this you take to 4. Okay, and then you lock the ratio, and then you जब बच्चों को दिखाने ये आप पहले करोगे. हाँ, और बच्चों को दिखाने के टाइम इसको छुपा दो आप. Okay, you just show them this. एंड जरूरी नहीं कि ऐसे ग्रीन, आपको थोड़ा तो ये दिखाना पड़ेगा कि ग्रीन है कि नहीं. हाँ, तो देखिए जब रेशो लॉक हो गया है तो ये दोनों हाथ इकट्ठे मूव कर रहे हैं. ओके, जैसा लेफ्ट हैंड मूव करता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल तरीके से दूसरा हैंड मूव करता है. अब अगर मैं रेशो लॉक हटा देती हूँ एंड देन वी कैन डू दैट एक्टिविटी जो हम पहले कर रहे थे जिसमें कलर चेंज होता है. तो अगर अब आपको ये 2 तरीके मिल गए हैं, हाँ, ये आपके पास एक टूल मिल गया. अब इसको लेके आप बच्चों के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स करवा सकते. अब किस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों के लिए आप बना सकते हैं यूजिंग दिस टूल, ये आपको सोचना है एज अ टीचर. अब मान लीजिए आपके पास ये आईसीटी क्लास में दिखाने का कोई तरीका नहीं है, तो कोई बात नहीं. यहाँ जो हमने ये अभी गेम देखा है, इस गेम को आप हैंड्स ऑन तरीके से भी तो करवा सकते हैं. क्यों, इसमें जो ऑडियो इनपुट आ रहा है वो आप कोई घर अपने हाथ में कटोरी चम्मच लेके भी घंटी बजा सकते हैं जैसे ही वो सही प्रोपोर्शन पे पहुंचे. तो इस तरह से भी उनको फीडबैक दे सकते हैं और उसके बाद उनको गेस करने के लिए बोल सकते हैं कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है. ओके, any other ideas that you want to give for using this kind of tool? मैम ये दोनों हैंड्स को एक ऐसे स्टिफ अगर स्ट्रिंग बांध दे और हाँ. एक 3 पे रखे और एक 4 पे रखे तो से साइमल्टेनियसली दे कैन लाइक आगे पीछे जा सकते. हाँ, तो स्ट्रिंग एक बांध फिक्स दे. हो जाए अच्छा, तो हाँ, फिर ये fix. रेशियो फिक्स हो जाए. तो वो रेशो लॉक हो जाएगा. जैसे यहाँ रेशो लॉक का ऑप्शन है, हाँ वो रियलिटी में भी रेशो लॉक करने का ऑप्शन उनके पास हो जाएगा. सॉरी, मेरा ये माउस का प्रॉब्लम कर रहा है.
ठीक है, तो ये तो एक हमने गेम देख लिया. एनीबडी एल्स वांट्स टू गिव एनी सजेशन और एनी आइडिया फॉर एन एक्टिविटी? Any other Ma'am, teacher? this range can be increased, na? This is 0 to 10. Yes, it So can be. जैसे मैंने यहाँ है ना, ये आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं को. और ये अभी रेंज 0 to 10 है. You can even change it to 0 to 20 और 0 to 30 also. okay. हाँ, तो 0, so यहाँ आप इसको. And you can hide the number also. Yes, you Yes. can. It is possible for you to hide the numbers. Okay. And then you can hide the numbers like this. अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो नंबर हाइड हो जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो नंबर्स दिखते हैं. तो दोनों तरीके से आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके बच्चों को दिखा सकते हैं और उनको ये प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम्स करा सकते हैं. तो चलिए अब दूसरे टूल की तरफ हम चलते हैं जल्दी से. टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है. सो दूसरा टूल है प्रोपोर्शन प्लेग्राउंड. ओके, सो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं. पहली सिचुएशन है माला बनाने की. ओके, सो अब इसको अगर यहाँ पे हम करते हैं तो आपको एक ही माला का दिखता है और उसमें आपको ये पैटर्न भी पता चलता है. दानवीर सिंह जी, आप एनोटेशन बंद करेंगे प्लीज. ओके, हाँ, तो यहाँ पे आपको पैटर्न भी दिख रहा है कि 2 रेड है और साथ में 1 ब्लू है. ओके, अब इसी तरह से आप बच्चों को कोई इस तरह का सवाल देना चाहते हैं कि यहाँ पे तो 2 रेड है और 1 ब्लू का पैटर्न है, तो इधर आप उसका उसी पैटर्न को मेंटेन करते हुए आप क्या किस तरह की माला बना सकते हैं. तो इसमें बच्चे अलग से अपने आप ट्राई कर सकते हैं कि उन्होंने 2 लिए, 3 लिए और चलिए 1 ले लिया, फिर एक और लिया, फिर एक और लिया. तो यहाँ उनको इधर बीच में उनको दिख रहा है कि ये पैटर्न मेंटेन नहीं हो रहा है, तो फिर वो कोशिश करेंगे और एक और बढ़ाया, एक और बढ़ाया, एक और बढ़ाया. अब देखिए, अब पैटर्न बिल्कुल सेम हो गया. सो यहाँ पे 2 के साथ 1 ब्लू है, यहाँ पे भी हर 2 के साथ 1 ब्लू है और उनको ये विजुअल फीडबैक मिलता है इस तरह की चीजें डिटरमाइन करने का. ओके, सो नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे कलर का प्रॉब्लम है. सो एक ब्लू बलून आया, 2 ब्लू बलून का कलर यहाँ पे आ गया. अब इसमें हम कितना येलो मिक्स करेंगे देखते हैं. एक बार हमने येलो मिक्स किया, अब इससे ये कलर आ गया. अब एग्जैक्टली अगर ऐसा ही कलर यहाँ पे बनाना है तो हमने अगेन 2 लिया और 1 येलो लिया. वी गॉट द सेम थिंग. देन वी टुक 2 मोर and then we took 1 more here, again we got the same things. So इस तरह से बच्चे एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि कितने तरह के प्रोपोर्शंस आप बना सकते हो जिसमें उन चीजों का रेशियो सेम है एंड देन कलर विच इज लुकिंग इज ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम. ओके, देन yet another situation in which proportions is useful is in determining length and width of and उसकी proportional length and width दूसरे कहीं बनाना. ठीक है, तो जैसे इसकी 5 लेंथ 5 है और विड्थ भी 5 है. अब यहाँ पे हमने दूसरा लिया है, उसकी भी लेंथ 5 है और विड्थ 5 है. अगर इसका एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल आपको कोई एक ये टेबल बनाना है तो आप क्या क्या लेंथ दे सकते हैं. अब 6 में देखिए वो दिखा रहा है 6 और 5 में नहीं हुआ प्रोपोर्शनल, 7 8 और 5 में नहीं प्रोपोर्शनल हो रहा है, 9 और 5 में भी नहीं प्रोपोर्शनल हो रहा है. ओके, 10 और 5 में भी नहीं हो रहा है. अब इसको बढ़ाते हैं, 10 में हो गया. ओके, अब इसको 9 लेते हैं और इसको भी 9 लेते हैं, फिर से ये प्रोपोर्शनल हो गया. अब इसमें यहाँ पे 1 घटा देते हैं. और अब बच्चों को ज्यादातर ये इस तरह का थिंकिंग होता है कि अगर यहाँ 1 घटा दिया है
तो यहाँ पे भी अगर हम 1 घटा देंगे तो वो उसके बिल्कुल बराबर हो जाएगा। क्या ये सही है? क्या इस तरह का सोचना सही होगा? इट इज स्टिल नॉट प्रोपोर्शनल। No, it's not proportional. हाँ, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल। सो किस तरह से हम अब इसको प्रोपोर्शनल बना सकते हैं? हम थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। सो 2 and 4 लिया, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे बताइए? चलिए 4. हम 4 ले लेंगे मैम ऊपर। 4 लेंगे, ठीक है, चलिए 4 ले लेते हैं। 4 and then यहाँ क्या ले? 4 and हाँ। So now can you see the visual is exactly the same. Now it looks proportional. आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे भी जिस तरह का है और यहाँ पे भी जिस तरह का ये जिस तरह से बॉल गई है, इट इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल। ये एक्चुअली बिलियर्ड्स का टेबल है, तो इसमें दिखा रहा है कि अगर आपकी बिल्कुल प्रोपोर्शनल टेबल होगी तो बॉल एग्जैक्टली सेम तरीके से जाएगी। ओके, आप लोग को समझ में आया? आई होप। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So next is the cost and the rate. Now this is also a kind of a proportional situation. So यहाँ पे आप एक एप्पल का कॉस्ट, यहाँ डॉलर दे रखा है, आप रुपीज मानने को बोलिएगा उनको। मान लीजिए आजकल तो वैसे 40 रुपए का एक एप्पल आता है कई बार। हाँ, तो हाँ यहाँ डॉलर है तो चलो हम मान लेते हैं $3, $4 का मान लेते हैं। तो इसी तरह से अभी अगर इसको हम पढ़ाते हैं, कुछ होता है यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर, नहीं, दिस कैन नॉट चेंज। सो 1 एप्पल है, $4 है। लेट्स ओके, वी कैन इंक्रीज इट टू नंबर ऑफ एप्पल्स। एक मिनट, सॉरी, नाउ वी हैव टू डू दिस। यस, सो अगर 1 एप्पल का कॉस्ट, ये यूनिटरी मेथड जो आप बात कर रहे थे, 1 एप्पल का कॉस्ट $4 है और आप बच्चों को यहाँ पे 6 एप्पल दे देते हो, तो उसका प्रोपोर्शनल कॉस्ट कितना होगा? कितना होगा? 24. कितना होगा? 24. देखिए दूसरी जो ये जो आपको एरो दिख रहा है यहाँ पे, ये अभी नीचे, सो दिस एरो इज डाउन, अ लिटिल बिट डाउन, एंड व्हेन वी रीच 24 दे बोथ विल बी एट द सेम प्लेस। Is it not moving up? Let me reduce this then. Yeah. Oh, because they were 5 apple, not 6. So what? I think maybe the upper limit here is 20. Exactly, they have 20 हाँ, का हाँ. limit. Yeah, that's just right. So 5 का 20 होगा. So this way, students can explore and understand. They can create different proportional situations by reducing the quantities, by increasing the quantities, by increasing the cost, and all kinds of variations they can do, and they can explore and understand. So I hope that you will be able to use at least the ideas from these tools, if not the exact tools in your classrooms. क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली ये नहीं भी यूज करते तो इनके आइडियाज लेके आप क्लासरूम में डिफरेंट एक्टिविटीज डेफिनेटली करवा सकते हैं। सो any feedback or comments on these resources? Ma'am, I have one question actually. Yeah. And just a minute. So it is in the unit number 2. And there is one video which I am not able to hear. I heard 2-3 times, but it is opening, but the voice is like cracking. And okay. Unit number, yeah. So can you just post on the discussion forum which unit it is and which problems it is, where exactly is the problem, or the link of the video or something for us to identify, and we will have a look at it and replace the link with the correct one. Okay. Tuba, can you also have a look at this? Tuba? Yeah, I can look at it.
I just email me the link instead of the discussion forum, because lots of discussion is going on there, so it might get Okay. lost. So Tuba, can you just give her I your, will give, yeah. give him your email? Yeah. Okay. Thank you. Yeah. मैम Yeah, हाँ, this बोलिए. is मैम बोलिए. सुभाषिनी मैम हाँ, सुभाषिनी, बोलो. Ma'am, when we can give examples of indirect proportion also. For example, when the speed is increasing, so the time taken will be reduced. Yes. That can also be introduced so that the students may always not think that it is always direct proportion only. So indirect Yes, yes. proportion also can happen in real life. Yes, yes. I mean, otherwise they tend to think that only direct proportion is correct. And lots of students face a lot of problems in that man workers kind of problems. True. If you increase the number of people, then the hours will be reduced. They are not able to understand that even at 10th standard level. So I hope that you will be engaged. You will be able to engage students in proportional reasoning. You'll be able to analyze the problems and understand students' difficulty, and are able to use the ideas in the course to improve the learning of your students. So that's all from my end. We end this session here. If there are any further questions, you can ask on discussion forums. Okay? Okay then. Bye everyone. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice Thank you, day. ma'am. Thanks, ma'am. Thank you.